Okay, we are live. Hello, good evening, and welcome back to the Law Entrance YouTube channel and to another session of the Hindu analysis. Today, 17th of December, and we are live. If you guys have joined the stream, please let me know through some responses in the chat box, and then let's begin our discussion for the day. By the way, in case you guys are not aware, I know most of you are aware, but in case you are not, CLAT results are out. So do go check your results if you appeared for the CLAT exam this year. And if you did not, then maybe take some learnings from the past year paper, this year's paper of CLAT and ALET. Apart from that, the SLAT exam is approaching. Make sure your preparation is right on track. Marathons are happening every day. I took the reasoning marathon yesterday. Make sure that you watch it if you haven't yet. आपकी AR की marathon अभी बची है जो शशांक सर लेंगे. So do turn up for that as well and prepare very diligently for the SLAT exam. If CLAT or ALET did not go in your favor, if they did, फिर तो मजे ही मजे हैं. But SLAT is a very good opportunity to redeem yourself अगर results आपके फेवर में नहीं रहे तो. That being said, for 2027 students, now is the time to start getting serious, getting into preparation zone, starting with the newspaper, starting to cover your basic concepts. So do get in that preparation mindset, क्योंकि the better you prepare, the more time you have, the better are your chances in the CLAT exam. With that, let's start today's discussion. Let's look at the agenda for the day. Good evening to everyone who has joined the stream. Let's begin. So आज के एजेंडा में 3 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं which are a little different. उसके अलावा 5-6 articles on the newspaper like always which we'll discuss. Editorial articles mostly we'll discuss on the newspaper today. ठीक है, इतने ज़्यादा कुछ डिटेल डिस्कशन वाले हैं नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाले. The first topic of today's agenda is regarding the rupee touching 91 rupees in comparison to the US dollar. So 1 USD is now more than 91, which is a new record low for the rupee in terms of its value. And the second news is regarding the Apache helicopters. India is getting the Apache helicopters, which are one of the best combat helicopters in the world. So उसके बारे में थोड़ा सा discussion करेंगे. And then there is an editorial regarding the relationship between US and Venezuela. उसकी क्या importance है, क्या significance है, क्या चल रहा है, that we'll discuss briefly. Then of course 3 new vocabulary words of the day like always. That is what is on today's agenda. ठीक है, चलो let's start our discussion by going to the newspaper. I'll quickly present the newspaper for you all. Also start bringing more people to the stream so that we can start our MCQ based quizzes, Menti quizzes. मजा आएगा. धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हमारे नंबर्स लाइव वॉचर्स के, लाइव व्यूअर्स के, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू ब्रिंग मोर ऑफ योर फ्रेंड्स टू द स्ट्रीम्स, स्प्रेड द वर्ड, दैट वुड बी नाइस. चलो ठीक है. दिस इज टुडेज हिंदू न्यूज़पेपर for 17th of December. Let's start our discussion for the day. So first up you see सिडनी वाला जो शूटिंग हुई थी, मास शूटिंग सिडनी के बीच पे, बॉन्डी बीच पे, उसमें जो प्राइम एक्यूज्ड है वो पता चला है वाज एन इंडियन सिटीजन. द फादर, एक फादर सन डुओ थे ना, उसमें द फादर इज एन इंडियन सिटीजन. हिज नेम इज साजिद अकरम. ही वाज अ रेजिडेंट ऑफ हैदराबाद. Last came to India 2022 on a 2-week visit. According to government officials, preliminary investigation does not establish any local links. मतलब इंडिया से सच कोई लिंक है नहीं. ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज जो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं अटैक को, बैकग्राउंड चेक्स वगैरह चल रहे हैं. दिस गाय वाज फ्रॉम हैदराबाद एंड ही माइग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया इन 1998 ऑन अ स्टूडेंट वीजा, एंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ ही हैज लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ. Since moving to Australia, he just came 6 times to India in the span of 27 odd years. Last visit, as we saw, was in 2022. He has very limited contact with his family in Hyderabad. His father passed away in 2017. He did not return to India for the funeral as well. And his visits to India were mostly due to property disputes and visiting his elderly mother and all. So that's pretty much what we know as of now. And his family back in India had no knowledge of his radical mindset, his radical activities. There's no criminal record against Akram before this incident or in India. His radicalization and that of his son, whose name is Naveed, has no connection with India or Telangana whatsoever. They were mostly inspired by the ISIS ideology, ISIS.
So yeah, that's what we know as of now. Investigations चल रही हैं, जैसे जैसे details आएंगी we'll start discussing them. SIR outcomes are not important for you. You can move ahead. Nightclub fire. Luthra brothers deported from Thailand. Goa police get 2-day transit remand. मतलब लैंड होते ही गोवा पुलिस को कस्टडी मिल जाएगी उनकी. ये जो लूथरा ब्रदर्स हैं थाईलैंड भाग गए थे आफ्टर द फायर इन अ नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन, एंड नाउ दे हैव बीन डिपोर्टेड. गौरव लूथरा एंड सौरभ लूथरा. ठीक है. Let's move ahead. 6 children in MP hospital test positive for HIV after contaminated transfusions. Transfusions होता है blood, एक person से दूसरे person को देना, and contaminated transfusion से HIV can spread. ठीक है. City-based news we can skip. Not important for us. State-based news में देखते हैं what all can we discuss. Kerala to screen these movies. Not important. Bihar to double per capita income. Okay, I'll continue as CM till High Command decides. Says सितारा मैया. कहाँ के CM है सितारा मैया? कर्नाटका के, right? ठीक है. Nothing important here as such. This is again politics. BJP, Shiv Sena, Mumbai civic elections. Not important for us. Chhattisgarh Assembly, opposition denied discussion. Not important. ठीक है. Vyapam scam, 10 sentenced to 5-year prison term. So this was a scam which happened in MP. CBI court in Indore has sentenced 10 people to 5 years of rigorous punishment in connection with their irregularities in the Patwari recruitment exam linked to the Madhya Pradesh Vyapam scam. They also imposed a fine of 3,000 each on all of the accused. Okay. Archery gives policemen a new lease of life. Indigo crisis. Delhi High Court to hear plea on compensation to flyers. We all know Indigo wala crisis kya hua tha. Some flights were grounded, of difficulties, and then now High Court is saying कि सबको compensation देना पड़ेगा. ठीक है. All right. Noida Airport. Okay, we're down to the editorial section. The Trump NSS and Europe's existential crisis. What is NSS? This is the security strategy, national security strategy, which has been released by Donald Trump, the US president. And how is it related to Europe? How is it related to NATO? That is what this article discusses. Basically, European leaders were hoping that, Trump's rhetoric and tactics would slightly mellow down, but US is not really doing that. It's taking a very protectionist stance, and the new security strategy, the national security strategy, shows that Europeans hoping that he would ultimately stand by Europe, with Europe, that could be less of a possibility. अब यूएस की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी क्या कहती है? बेसिकली इज अ 33-page डॉक्यूमेंट विच शोज अमेरिका फर्स्ट अप्रोच. जैसे मागा मागा डोनाल्ड ट्रम्प कहते रहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. फोकस इज हेविली ऑन ट्रेड इम्बैलेंसेस, कि यूएस का ट्रेड जो है सुपीरियोरिटी पे रखा जाए, especially with China, and also talks about US interest in the Western Hemisphere, basically with the European countries, with European countries, and primarily the South American countries, Western Hemisphere में जो आती हैं. Basically, it ignores Africa, Asia, Australia, New Zealand in terms of economics. But Europe is portrayed more of a problem, not as a partner. So that is a new radical shift in terms of US की strategy, कि कैसे वो लोग जियोपॉलिटिक्स को अप्रोच करेंगे. अब यूएस यूरोप को कैसे देख रहा है? यूएस इज लुकिंग एट यूरोप लाइक अ सिविलाइजेशनल डिक्लाइन, वेयर दे आर सेइंग कि यूरोप वाले जो हैं अपनी माइग्रेशन पॉलिसीज कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जो वैल्यूज हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच लॉज हैं, वो हमसे अलाइन नहीं है. दे आर सप्रेसिंग पॉलिटिकल ऑपोजिशन, देयर इज लॉस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी. And it says that NATO countries could become majority non-European in the future, which is a very exclusionary sort of a stance. US कह रहा है कि it will support patriotic European parties to restore the greatness of Europe. And काफी सारे Europeans जो हैं, they look at it as an interference in domestic politics and even regime changes. तो यही सारी बातें हैं. अब एनएसएस कह रहा है कि यूरोप को प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए अपने डिफेंस की, हम नहीं रिस्पॉन्सिबल होंगे यूरोप के डिफेंस के लिए. And they also, hint that NATO should not keep expanding, which is basically a warning to Ukraine. They're saying that Europe should seek strategic stability with Russia. And ये जो रशिया का इन्वेजन है यूक्रेन का, this shows that Europe
has a real problem of cultural decay and not really much of a military threat. तो यही सारी बातें हैं. It's not, this NSS is not a direct policy, but this is more of a guide on how the administration thinks. It's mostly mandated by the US Congress and shapes up how their defense and military planning happens. So this has to be taken seriously. अब यूरोप केस पे 3 possible responses हैं. Either to ignore it and hope the policy fades away, either to flatter Donald Trump and hope that they are able to keep the US engaged, and the third would be accept that US is no longer a reliable ally and move on करें, आगे बढ़े, अपना डिफेंस खुद तैयार करें. तो ये 3 कोर्स ऑफ एक्शन यूरोप चूज कर सकता है. अभी तक यूरोप ने क्या किया? यूरोप ने एक मिक्स सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी यूज करी है, जहाँ पे थोड़ा सा अपीज कर रहे हैं, थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं. दे आर ऑफरिंग ट्रम्प टू विजिट यूरोप एंड डिफरेंट कंट्रीज. जर्मनी ने अपने प्लान्स ड्रॉप कर दिए हैं काफ़ी सारे, एंड दे आर बाइंग यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट टू अपीज यूएस. नेटो की हेग समिट की बात करें तो वहाँ पे भी डिफेंस बजट यूरोपियन कंट्रीज ने अपना बढ़ा दिया है. सो सेल्फ डिफेंस जो है उसकी तरफ जा रहा है यूरोप, बट इट्स गोइंग टू बी प्रीटी हार्ड फॉर यूरोप बिकॉज यूरोप हैज नेवर डिफेंडेड इटसेल्फ एज अ यूनिफाइड एंटिटी बिफोर. देयर इज नो इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन डिफेंस सिस्टम. काफ़ी सारे जॉइंट मिलिट्री प्रोजेक्ट्स हैं, बट उतना अच्छे से कोलैबोरेशन उनका हुआ नहीं आज तक कभी. एंड अगर यूएस ट्रूप्स विड्रॉ कर लेंगे तो काफ़ी सारे मैन पावर की शॉर्टेज हो जाएगी, काफ़ी सारे डिफेंस इक्विपमेंट की शॉर्टेज हो जाएगी. एंड वॉलेंट्री कंस्क्रिप्शन से ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं होगी. कंस्क्रिप्शन का मतलब होता है मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस, जैसे काफ़ी सारी कंट्रीज में होता है. साउथ कोरिया में आपको देखने को मिलेगा, सिंगापुर में देखने को मिलेगा, नॉर्थ कोरिया में मिलेगा, इसराइल में मिलेगा, जहाँ पे हर किसी को मिलिट्री में सर्व करना पड़ता है ना. सो दैट्स द डील. So yeah, that's pretty much what the article questions and raises these issues. Then left hand side पे you see stepping stone, India's nuclear governance needs regulatory independence. ये हम कल भी डिस्कस कर रहे थे. This is with reference to the शांति बिल, जो चाहता है कि इंडिया में प्राइवेट प्लेयर्स, फॉरेन प्लेयर्स आ जाएं इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड पावर जनरेशन, क्योंकि अभी सिर्फ 3% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग जनरेटेड बाय न्यूक्लियर पावर. एंड गवर्नमेंट का टारगेट है 100 गीगावाट की न्यूक्लियर कैपेसिटी बनाना बाय 2047, जिसमें वो काफी सारे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMRs भी बनाएंगे टिल 2033. एंड इस एक्सपेंशन के लिए ही गवर्नमेंट लेके आई है शांति बिल, विच इज गोइंग टू रिफॉर्म हाउ सिविल न्यूक्लियर पावर इज डेवलप्ड एंड गवर्न. अब कल हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया कि शांति बिल कैसे वर्क करेगा एंड हाउ इट लीगली अलाउज other entities to build and operate nuclear power plants, and the center would be issuing licenses to these entities and joint ventures and any other companies, and this opens up the landscape for domestic private companies as well. अब ये बिल इंपॉर्टेंट क्यों है फॉर न्यूक्लियर एक्सपेंशन? क्योंकि बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है 100 गीगावाट के लिए, एंड बाय अलाउइंग लाइसेंस्ड प्राइवेट एंटिटीज इट ब्रॉडन्स द पूल ऑफ इन्वेस्टर्स. एंड स्टेट फिर भी थोड़ा सा अपना कंट्रोल रिटेन करेगा, बट इन्वेस्टमेंट बेसिकली दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट. एंड उसके लिए उन्होंने जो इनकी लाइबिलिटीज हैं वो भी कैप कर दी है. अगर ऑपरेटर की कोई लाइबिलिटी होती है तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट में इट इज कैप्ड एट 3000 करोड़, एंड जो सिंगुलर लाइबिलिटी है वो कैप्ड है एट 1 करोड़ का हमने देखा था. एंड दैट इज व्हाट दिस आर्टिकल essentially tells you. तो पॉजिटिव इसके साइड यही है कि दिस मोबिलाइजेस कैपिटल, क्लैरिफाइज द रूल, एनेबल्स प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन. एंड कंसर्न्स यही है कि ये जो लाइबिलिटी कैपिंग है ये काफ़ी ज़्यादा कम है, एंड सप्लायर की अकाउंटेबिलिटी काफ़ी कम हो गई है इस वजह से, एंड न्यूक्लियर रेगुलेटर का जो इंडिपेंडेंस है वो भी कम हो गया है. तो यही सारी बातें हम कल डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में. 3 revolutions shaping American power. वैसे तो हमने ऊपर वाले आर्टिकल में most of the things have been discussed, but let's see what this article talks about. Okay, this talks about the G20 proposal, this talks about the national security strategy, and this talks about the heritage blueprint, which are all part of a same transformation. 3 different simultaneous revolutions in US statecraft. One is related to domestic political morality, one foreign policy behavior, and one is regarding global economic governance. तो यही कह रहे हैं कि they are looking at how civic space and domestic shift is happening in US, where traditional US norms like civic responsibility, respect for independent bodies, institutional restraint, all of these things are getting weakened, and political transgression जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया है. And NSS जो है it's focusing just on cultural unity, ideology, demographic stability as national security issues, whereas जो heritage plan है that focuses more on bureaucratic plans, ideological verification, mass replacement of officials, and ये सारी चीजें एक साथ चल रही हैं.
सेकेंड रेवोल्यूशन की बात करें, दैट इज रिगार्डिंग फॉरेन पॉलिसी. यूएस इज मूविंग अवे फ्रॉम इट्स स्टेबल अलायंसेस एंड प्रिडिक्टेबल कमिटमेंट्स. These alliances are more becoming more transactional in nature rather than more uh, inherent in nature. They are becoming very conditional कि आप हमारे लिए ऐसा करोगे तो हम आपके लिए ऐसा करेंगे. So it's transactional to the core, and the focus is shifting to the western hemisphere. माइग्रेशन जो है इन्होंने एक सिक्योरिटी थ्रेट की तरह दे आर डीलिंग विद इट, and they are putting a lot of constraints on sovereignty, lot of obstacles on political will, lot of obstacles for immigration and migrants, etc., which is resulting in a very फ्रेगमेंटेड ग्लोबल ऑर्डर. पहले क्या होता था, एक यूनिपोलर पावर थी यूएस, उसके बाद धीरे धीरे बाइपोलर हुआ, एक तरफ यूएस आ गया, एक तरफ रशिया चाइना आ गया, और यूएस के साथ यूरोपियन कंट्रीज थी, रशिया के साथ चाइना और ईस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज थी. अब जो है सब टूट फूट सा गया है, अब कोई किसके साथ है, कोई किसी और के साथ है, कुछ समझ नहीं आ रहा. तो इट्स वेरी फ्रेगमेंटेड, वेरी बाइफर्केटेड in terms of the global order. The alliances are very fragile and very weak in nature. एंड तीसरी जो बात करता है ये आर्टिकल, दैट इज अबाउट इकोनॉमिक ऑर्डर, कि G20 का जो आइडिया है, विच टॉक्स अबाउट अ 2-tier ग्लोबल इकोनॉमी, जिसमें एक स्मॉल ग्रुप जो है रूल्स बनाता है, जो 20 पावरफुल कंट्रीज हैं, बाकी जो 180 कंट्रीज हैं वो रूल्स फॉलो करती है. सो दैट इज समथिंग विच दे आर प्रोपोगेटिंग कि भाई इसको और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए. बेसिकली इंपीरियलिज्म वापस लेके आ रहे हैं, थोड़ा सा कॉलोनियल स्टाइल थिंकिंग वापस आ रही है, which is not in terms of territorial conquest. This is more in terms of creating a hierarchy in the world order, कि हम सबसे ऊपर आएंगे, उसके नीचे बाकी लोग आएंगे. So that is what this article tells us, that the US is moving towards protecting its sovereignty through contraction, and they are exercising this power through their hierarchy, through their economic power, through their military power, and they're trying to reshape global governance through exclusionary policies. And that is what this article tells us. Left hand side, you see blatant foul US militarized approach to Venezuela is a violation of international law. This we'll discuss on the PPT. Interesting article. India and US 2005 versus 2025. Let's see what this is all about. क्या चल रहा है? अच्छा ठीक है, कंपैरिजन किया है इन्होंने कि इंडिया यूएस के रिलेशंस जो हैं 2005 में बहुत एक हाई पॉइंट पे थे, एंड यूएस ओपनली स्टेटेड दैट इट वांटेड टू हेल्प इंडिया बिकम अ मेजर वर्ल्ड पावर एंड टेक अप ग्लोबल लीडरशिप. लेकिन अब जो है, आफ्टर द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, थिंग्स आर अ लिटिल डिफरेंट. एनएसएस इज मेकिंग यूएस मोर डिफेंसिव इन नेचर, एंड यूएस इज अनश्योर ऑफ इट्स ग्लोबल पोजिशन. They are trying to take supremacy and restore American supremacy, जहाँ पे they don't want to carry the world like a atlas. They don't want to take everyone together. They are looking at it like a burden now. पहले तो they wanted to strengthen the global system. Now they want to be on top of the global system, and that is the change in the US strategy. हमने डिस्कस कर लिया दो आर्टिकल्स में. It's pretty much the same thing. ठीक है, आगे चलते हैं. विमेन मोर विलिंग टू डोनेट ऑर्गन्स पोस्टह्यूमसली मतलब आफ्टर डेथ इन इंडिया. ओके, इंटरेस्टिंग. Future of governance in post-Maoist India. Let's read the gist of this article. While the Maoist insurgency has evolved in different phases since the Naxalbari uprising, the movement in its current avatar has largely been concentrated around the fifth schedule areas of central and eastern India, states with substantial tribal population. As recorded in the Planning Commission's expert committee report, a vast region with abundant natural resources was reduced to penury, matlab garibi, due to state neglect and poor governance. Going forward, India must pay close attention to governance paradoxes that continue to plague matlab impact negatively most regions under the fifth schedule. ठीक है, cool. Inside a teacher's exhausting day as a booth level officer, this you can skip. Election Commission publishes draft voter list for 5 states and union territories. West Bengal के sports minister ने resign कर दिया because of the messy event. इनका नाम है अरूप बिस्वास. Okay. Supreme Court issues notice after Justice Verma challenges inquiry panel formed by Speaker. With PM in Jordan, Jaishankar in Israel, India reiterates its position on West Asian conflicts. अच्छा, मोदी जी जो है जॉर्डन गए हैं और उनको जॉर्डन का सबसे हाईएस्ट ऑनर भी दिया गया है, उनको नवाजा गया है उससे. कैन यू गाइस क्विकली टेल मी द नेम ऑफ द अवार्ड? जॉर्डन का नहीं, सॉरी, पार्डन मी, इथियोपिया का हाईएस्ट ऑनर उनको दिया गया है. यहाँ पे लिखा है ये रहा, PM honored with Ethiopia's highest award. The name is the Great Honor Nishan of Ethiopia by his Ethiopian counterpart Abiy Ahmed Ali.
ठीक है, सो ये आपको याद रखना है, द ग्रेट ऑनर, निशान ऑफ इथोपिया, ये मोदी जी को मिला है। ठीक 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 ठीक, ओके। Infiltrators from Myanmar border in 2 years. Okay. 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 Nothing important here. Government introduces bill to replace Manrega amid loud protest. We discussed this in detail yesterday. This is the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen bill. कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की प्ली अगेंस्ट राहुल गांधी सोनिया गांधी इन द नेशनल हेराल्ड केस। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है बेसिकली ये। ठीक है। कॉन्शियस डिसीजन टू सेपरेट फंडिंग फ्रॉम रेगुलेटर से ऑफिशियल ऑन हायर एजुकेशन बिल, ये भी हमने कल डिटेल में डिस्कस किया है, सो दोबारा इस पर टाइम स्पेंड करने का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं आज सुबह, कल सुबह, बिकॉज ऑफ फॉग, हैवी डेंस फॉग ऑन यूपी एक्सप्रेस वे। 13 पीपल डाइड, 60 इंजर्ड एंड व्हीकल पाइल अप, यू कैन सी। आग वाग भी लग गई थी। Vehicles catch fire within minutes of collision amidst dense fog. 3 victims identified. 100 vehicles involved in accidents in the past 3 days. Supreme Court to examine plea seeking safeguard of intersex children. Petition calls for intersex recognition alongside male and female options in the census. Okay. ये इंपॉर्टेंट वन लाइनर है आप लोगों के लिए। इंडिया मालदीव्स की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्विवेलेंट कंप्लीट हो गई है। इंडियन आर्मी और मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस के बीच ये एक्सरसाइज हुई इन थिरुवनंतपुरम, विच इज इन केरला। ओके, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति भवन डिस्प्लेस पोर्ट्रेट्स ऑफ ऑल परमवीर चक्र अवार्डीज। 21 परमवीर चक्र अवार्डीज हैं हमारे देश के। परमवीर चक्र इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन द कंट्री एंड यूजुअली वॉर टाइम में सैक्रिफाइस के लिए दिया जाता है। इट्स द हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर डिस्प्लेड फॉर awarded for displaying the most exceptional acts of valor, courage and self-sacrifice during war. Recently एक मूवी आई थी फरहान अख्तर की on a Paramveer Chakra awardee. Can you guys tell me the name of the person who was the actual Paramveer Chakra awardee जिस पे वो मूवी थी? 120 बहादुर नाम था मूवी का। जल्दी से बताओ मुझे किसकी बात कर रहे हैं हम। बाकी एक और मूवी अभी आ रही है बॉर्डर 2, आई थिंक, या बॉर्डर 2, उसमें भी I think Diljit Dosanjh is playing the role of a Paramveer Chakra awardee, the only Paramveer Chakra awardee from Air Force. If you guys are aware of the name, tell me the name in the chat box very quickly. Indian Army receives final batch of Apache helicopters. These are the AH-64E Apache helicopters, attack helicopters. जोधपुर का जो आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन बेस है वहाँ पे they have received. They were contracted in February 2020 under a $600 million deal with the US. थोड़ा सा पीपीटी पे डिटेल में डिस्कस करेंगे हम इसको। ओके, आगे चलते हैं। रुपी ब्रीचेस 91 टर्न्स वीकेस्ट एशियन करेंसी इन 2025. दिस आल्सो विल डिस्कस ऑन द पीपीटी। लोकसभा पासेस बिल ऑन 100% एफडीआई इन इंश्योरेंस। एफडीआई इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। We are closer now than ever to a peace deal, says Donald Trump on Ukraine. Indian arms maker held meeting in Russia. Mass shooting duo driven by Islamic ideology. Cambodia must announce ceasefire first, says Thailand. Trump sues BBC for $10 billion, accusing it of defamation over editing speech. Okay, ठीक है. Green shoots up the IPL overseas chart. Prashant Karthik strike gold. We're talking about the IPL auctions. KKR has spent 25 crore to sign the Australian all-rounder Cameron Green. ठीक है, cool. इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस हाईएस्ट पता होना चाहिए. देन आज जो है T20 मैच है नेक्स्ट, 4th T20 मैच, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका. Ashwari Pratap Thoma delivered a landmark performance at the 68th Shooting Nationals, firing a world record 470.5 to clinch gold in the men's 50-meter rifle. ठीक है, वन लाइनर याद रखना आप लोग ये, बिकॉज वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसलिए इंपॉर्टेंट है. That's pretty much it for the newspaper of the day. Let's come back to our PPT and discuss the remaining 3 articles. Okay, the first one is regarding rupee touching 91 rupees, which is the lowest ever it has ever been. Rupee on Tuesday breached one more psychological mark by depreciating beyond 91 to 91.14 on the spot market against US dollar during intraday trade, making it one of the weakest major currencies globally this year and the weakest in Asia
in 2025. It gained a bit during the day to close at 90.93 as compared with its previous close of 90.78, down nearly 16 paise, a fresh all-time low. Anindya Banerjee, head currency and commodity research of Kotak Securities, said the pressure on currency is being driven by three factors: sentiment, capital flows, and global macro backdrop. The uncertainty around the pending India-US trade deal and broader trade war environment is weighing on the markets. From a flows perspective, foreign portfolio investors have pulled out almost $2.7 billion in the first 2 weeks of December alone, already among the largest monthly outflows this year, with the month still unfinished. He said globally rising US bond yields and expectation of Bank of Japan rate hike have triggered an unwinding of the yen carry trade. This has led to risk aversion across equities, credit, crypto, and some commodities, adding speculative pressure on emerging market currencies, including the rupee. Stating that the rupee may head towards 92, he said RBI's relatively limited intervention has appeared to be deliberate. With India's growth strong and inflation contained, policymakers may be comfortable allowing some currency depreciation, especially in a global trade war environment where a weaker currency can support export competitiveness. Okay, so that brings us to the end of this article. Second one is regarding US and Venezuela. In line with a series of hostile moves, the US seized a Venezuelan oil tanker, Skipper, on December 10. Venezuela called it the latest example of Washington's piracy, kidnapping, theft of private property, extrajudicial execution in international waters. The tanker was part of Venezuela's ongoing efforts to support Cuba through subsidized oil shipments, with proceeds from resale to China providing Havana crucial revenue. For decades, Venezuela has sent oil to Cuba at highly subsidized prices. With Cuba sending doctors and security professionals to Venezuela, the seizure represents a troubling escalation in US policy towards Venezuela under Nicolas Maduro. It is also clear that US Secretary of State Marco Rubio, a major hawk on US foreign policy towards Cuba, has sought to disrupt one of the island nation's economic lifelines. The obvious moves to engineer regime change in Venezuela and other brazen acts mark a new low in US foreign policy, recalling the interventionist era of Monroe Doctrine in Latin America. Before the seizure of Skipper, the US had also conducted strikes in Caribbean waters on boats that Washington alleged were used by drug traffickers. These attacks appear to constitute act of war carried out with clear legislative authorization. Trump administration insists that operations are part of its war on drugs, but has not presented credible evidence to link Mr. Maduro to cartels or to drug trafficking networks. Be it the disproportionate economic sanctions that hurt Venezuela's ability to sell its crude oil, covert actions to take down Maduro presidency, the ill-conceived recognition of an opposition, Juan Guaido as president, or the extrajudicial killings in Caribbean and the seizure of oil tanker, these actions are tantamount to violating the rules of international order, and the US purports to uphold. थोड़ी सी geography की बात करें तो the Andes Mountains are seen in Venezuela, including the Bolivar Peak, which is the highest in Venezuela. Then you have the Orinoco River Basin and Llanos, which are core for agriculture, cattle ranching. Then you have the Lake Maracaibo, which is the largest lake in South America and a major oil hub. You have the Guiana Highlands and Angel Falls, which are also the world's tallest waterfall. World's largest proven oil reserves are also in Venezuela, and it's also rich in iron ore, gold, diamond, and hydroelectric potential. And इसीलिए यूएस की इतनी नजर रहती है वेनेजुएला पे. The last article today is regarding Indian Army receiving final batch of Apache helicopters. This we discussed on the newspaper. AH-64E Apache helicopters completing its 6-unit fleet at the 451 Army Aviation Squadron base in Jodhpur. They were landed in Air Force Station Hindan in Ghaziabad before being inducted into service. Contract था February 2020 का $600 million deal with the US. 3 helicopters were delivered early this year. The arrival of final batch will ensure full operationalization of the Army's dedicated Apache squadron. The 6 advanced attack helicopters will be stationed at Jodhpur. The squadron was raised in March last year to cater specifically to operational requirements on Western Front. Apache is the world's most advanced multi-role combat helicopter. Developed by Boeing, built for high-intensity warfare, especially in network-centric and multi-domain environments. It's one of the most advanced and lethal attack helicopters in the world. Inducted in the US Army in 1984. सेंसर ड्रिवन टारगेटिंग है, लॉन्ग बो रेडार है, थर्मल इमेजिंग है, नाइट विजन है, कैन डिटेक्ट 256 टारगेट्स, प्रायोरिटाइजेस 16 थ्रेट्स इन सेकंड्स, एडवांस्ड वेपनरी आर्म्ड विद 30 mm chain gun, 70 mm rockets, AGM-114 Hellfire missiles for anti-armor and precision strikes.
All weather operability है, all terrain ready है, operates in day night, low visibility, high altitude, extreme weather conditions as well. With that, we come to the end of the analysis. Let's look at today's vocabulary. The first word is holler. Holler का मतलब होता है to give a loud shout or cry. Shouting, yelling, crying. There's no need to holler. I'm in the next room. Antonyms are murmur, mutter or whisper. The next word is disrelish. Disrelish किसी चीज को dislike करना, enjoy ना करना. Regard with dislike or distaste. Aversion, disfavor, dislike are synonyms. Appetite, affection, fondness are antonyms. I disrelish the thought of sitting through endless meetings on the matter. The last word for the day is enamor. Enamor का मतलब होता है be filled with a feeling of love for some. ये तो I think हमने कल कर लिया था. Repeat हो गया ये word. चलो कोई बात नहीं. कल हम 4 words कर लेंगे इसकी जगह. So enamor was to be in love or be infatuated with something. A beauty enamored the prince. All right, with that, we come to the end of today's analysis. If you guys have any doubts, any questions related to preparation, related to strategy, feel free to write to me through my email. You guys already have it. बाकी कल मिलेंगे, बाकी का डिस्कशन कल करेंगे in tomorrow's analysis. Thank you so much for participating and attending today. I'll see you guys tomorrow. Tada, bye bye, take care. Signing off.